Okay. So in the expansion of a gases, what we are trying to read is the first point. Whenever a gas is being heated, both pressure and volume will change. We'll try to learn how they are being changing, which is increasing and which is decreasing in the further session. But one thing is very clear that whenever a gas is being heated, both pressure and volume is being changing. As both pressure and volume are being changing, so depending on the pressure and volume, we are having two coefficients beta. First one is known as volume coefficient represented by alpha. Alpha is equals to your Vt minus V naught divided by V naught into T. If I take the Vt minus V naught outside, Vt minus of your V naught is equals to, this will become for me V naught alpha into your T. Can I write like this beta? Is that clear? If I take Vt, volume at your T degree centigrade is equals to your V naught plus V naught into alpha into T. Isn't it? Is that clear, beta? Okay, so volume at your T degree centigrade is equals to V naught into 1 plus alpha into T. So volume at T degree centigrade, I can write like this. That means if I'm writing the volume at V1 and V2 at some temperature, V1 and V2, V0 and V0 will get cancelled. It will be your 1 plus alpha into T1 divided by 1 plus alpha into your T2. Clear? T1 and T2 के टेम्परेचर पे समझिए, T1 and T2 के टेम्परेचर पे समझ लीजिए, ठीक है ना बेटा? So volume coefficient का अपने को रिलेशन क्या याद रखना है? Alpha is equals to Vt minus V naught divided by V naught into your T. In the same way, we are having one more coefficient that is known as of your pressure coefficient, number 2. Pressure coefficient represented by beta. Solids के different है बेटा, ये beta है और यहाँ. Okay. Provided mass and volume are kept constant, so beta can be written as of your pressure at your T degree centigrade minus pressure at your 0 degree centigrade divided by pressure at your 0 degree centigrade into T, provided mass and volume of the gases remain to be constant. The same way, pressure at your T degree centigrade minus of your P naught will be equal to your, this will become for me how much beta? If I'm writing in the given condition, this will be your P naught into your beta into your T. So pressure at your T degree centigrade is equals to your P naught plus P naught beta into your T. So pressure at your T degree centigrade is your P naught into 1 plus beta into your T. Clear, beta? So pressure at your T degree centigrade is equals to your P naught into 1 plus beta into T. So if I'm talking about it, two pressures, like say P1 divided by your P2, that will be equal to P naught will get cancelled, 1 by beta into temperature T1 divided by 1 plus beta into your temperature of your T2. So this is your P1 and P2 value. Clear? Yeah. Once again beta, एक बार फिर से एक बार देख लो. Whenever a gas is being heated, both pressure and volume will change. If I keep the mass of the gas constant, mass of the gas or pressure अगर हम constant रख रहे हैं right now in this one, then volume at your T degree centigrade, that is alpha is known as volume coefficient, so that will be equal to your Vt minus V naught divided by V naught into T. Or else I can write Vt minus V naught is alpha into T, or Vt is equals to your V naught into 1 plus alpha into your T part. Okay. The same way, pressure coefficient, if I'm keeping the mass of the gas and volume of the gas constant, beta will be equal to your Pt minus P naught divided by P naught into T. Our pressure at your T degree centigrade is equals to your P naught into 1 plus beta into T part. Clear, beta? Let me draw the graph for this one. Now let us try to draw the graph for this one. I hope you remember this graph, beta, everyone. Y is equals to your m into your x plus c. M represents me what? Slope. That is nothing but of your tan theta. Tan theta is equals to your dy by your dx. C is equals to your constant, isn't it? And here it is positive. Okay. If it is y is equals to mx plus c, the graph will be something like this. I hope you remember this one. I'm roughly drawing it. So the graph will be a straight line like this with positive constant. Okay. In the same way.
Y is equals to your mx minus of your c. So what will be the graph for this one, beta? The graph will be something like this. This is your x-axis, this is your y-axis. So the graph will be a straight line like this. And c is your constant. So this one is minus c, and this one is right now here plus c. Okay, and here it is making an angle of your theta. Okay, and with this one, if I'm taking, this one will be an angle of theta. Clear? Minus for the y is equals to mx minus c, the graph will be in the downward direction. Y is equals to mx plus c, the graph will be in the upward direction. I hope you remember this one. So this is page number 1. No, this is page number 40. चलो अब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ लिखते हैं. देखो बेटा, फर्स्ट ग्राफ VT ग्राफ, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ. तो फॉर्मूला क्या है अपने पास? V at your T degree centigrade is equals to V naught plus of your, or I can write as of your 1 plus alpha into your T, isn't it? Or else I can write here volume at T degree centigrade is equals to V naught plus V naught alpha into your T. Clear, beta? Comparing with your straight line equation, y is equals to constant plus of your m into your x, यानी x axis पे क्या लोगे आप टेम्परेचर, y axis पे क्या लोगे T डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है ना? अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. देखो एक बार, ठीक है. y एक्सिस पे ले लेते हैं वॉल्यूम 80 और T डिग्री सेंटीग्रेड, और x एक्सिस पे लेते हैं अपने टेम्परेचर, और कांस्टेंट की जगह क्या है V नॉट. सो व्हाट टाइप ऑफ ए ग्राफ विल बी गेटिंग बेटा? हाँ, V नॉट स्लोप होगा. तो व्हाट टाइप ऑफ ए ग्राफ विल बी गेटिंग? विल बी गेटिंग ए ग्राफ समथिंग लाइक दिस. ठीक है. एंड यहाँ से यहाँ तक जो होगा दैट विल बी योर कांस्टेंट, दैट विल बी इक्वल टू योर V नॉट. ठीक है. और इस पॉइंट पे वॉल्यूम अपने को 0 बनता है बेटा. इस पॉइंट पे अपने को वॉल्यूम 0 बनता है. सो द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम इज बिकमिंग 0, द टेम्परेचर वी नीड टू कैलकुलेट. वो कितना टेम्परेचर होता है बेटा? T is equals to minus of 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. इस टेम्परेचर पे अपने को वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. एट T is equals to minus of 273.15, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 0. So therefore I can take here, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, वॉल्यूम में T डिग्री सेंटीग्रेड कितना बन गया? 0. दैट इज इक्वल्स टू योर V नॉट इंटू योर, ये कितना बनेगा बेटा जल्दी से बताओ? V नॉट प्लस दिस वन इज योर V नॉट इंटू अल्फा इंटू योर T. ठीक है ना? तो अपने को अल्फा की वैल्यू निकालना है, isn't it? So टेम्परेचर तो दे रखा है मेरे पास राइट नाउ, isn't it? अल्फा की वैल्यू निकालना है. V नॉट इज राइट नाउ फॉर मी योर कांस्टेंट. ठीक है. तो इसमें से अगर मैं V नॉट कॉमन ले लो, सो दिस विल बी 1 प्लस अल्फा इंटू योर T. So this is 0. So this 0 divided by V naught is equals to 1 plus alpha into T. Okay. So what will be the value of an alpha beta? What will be the value of an alpha? देखो यहाँ पर 0 by anything is right now for me 0. तो ये बन जाएगा 1 is equals to minus of alpha into T. यानी alpha will be equal to minus of 1 by your temperature T. यानी that will be equal to minus 1 by, वो temperature कितना आया? Minus of 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. A minus चले गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा वैल्यू is equals to 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. ये अपने को याद रखना है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डेरिवेशन किया, वरना आप लोग डायरेक्टली याद रख सकते हो. एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम विल बिकम 0 मींस एट ए वॉल्यूम विल बिकम 0 एट T इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर है बेटा? अगर वॉल्यूम 0 बन गया, तो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ योर अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 1 by 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. आया क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? द सेम थिंग इज फॉर बीटा आल्सो बेटा.
I'm not deriving it. So if I'm trying to draw the next graph, that is pressure versus your T graph. Number 2, ET graph. ET ग्राफ, इसके लिए भी ग्राफ ऐसे ही होगा, ठीक है, and the graph will be something like this. Same. यहाँ पर P की जगह क्या आ जाएगा, V0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या रिमेन कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। प्रीवियस केस में क्या प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट बेटा, प्रेशर इज रिमेनिंग फॉर मी कांस्टेंट, ठीक है। ऑन एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे हम लोग, ऑन एक्स एक्सिस देयर विल बी अ टेम्परेचर इन योर डिग्री सेंटीग्रेड, ये पॉइंट पे अपने को प्रेशर 0 बनता है, वो टेम्परेचर कितना होता है बेटा, राइट नाउ फॉर मी अगेन सेम। तो इसको भी अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ योर बीटा इज आल्सो इक्वल टू योर 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड। 15 ले लो, अप्रोक्सीमेटली ले ले रहा हूँ बेसिक। तो मैं देखो एक पॉइंट में क्लियरली लिख सकता हूँ, फॉर ऑल गैसेस, स्टार मार्क डाल के लिख लीजिए, फॉर ऑल गैसेस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और एग्जैक्टली लिखना है तो आप लोग 0.15 भी लिख सकते हैं, वरना जरूरत ही नहीं है, दिस इज मोर देन इनफ फॉर। ये तो केमिस्ट्री में भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। सो ठीक है, सो VT ग्राफ हो गया अपने पास, और प्रेशर वर्सेस योर टेम्परेचर का भी ग्राफ हो गया, दोनों के लिए भी स्ट्रेट लाइन रहेगा विथ योर पॉजिटिव इंटरसेप्ट पार्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है। ग्राफ से एक बार फिर से देख लो बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, और tan थीटा स्लोप कैसे निकालते हैं, dy/dx, c क्या है बेटा, कांस्टेंट। अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c होता, ग्राफ ऊपर वाला जैसा होता, माइनस में होता तो ग्राफ नीचे। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ मैंने डिराइव किया है, देखो एक बार यहाँ पे, इसमें कोई डाउट है क्या, देख लो। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने को, बस ग्राफ में वो ग्राफ याद रखना है और अल्फा की वैल्यू याद रखना पड़ेगा। अल्फा वैल्यू इज इक्वल टू 1/273.15, और प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के लिए वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, उसके लिए भी बीटा की वैल्यू है 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो फॉर ऑल गैसेस अल्फा एंड बीटा वैल्यू इज 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो किसको बोलते हैं बेटा? The temperature at which both pressure and volume of a gas become zero is called as what? Absolute temperature. The temperature at which pressure or volume of gas becomes zero is called absolute temperature. Okay, so the temperature at which pressure or volume of a gas becomes zero is called as what? Absolute temperature. So its value will become how much beta? Its value is कितना बेटा? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और इट इज योर 0 डिग्री केल्विन। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 0 डिग्री केल्विन बोल सकते हैं, या इट इज -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। Okay, so absolute zero is nothing but the temperature at which
the pressure or the volume of your gas becomes zero is called your absolute temperature. और उसकी वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री केल्विन. क्लियर है बेटा? वेरी गुड. चलो इस पे देखो बेटा, एट एब्सोल्यूट जीरो, at absolute zero, first point याद रख लो, pressure and volume will be equal to your zero. Okay, pressure and volume will be equal to zero. Or kinetic energy of your molecules ceases. That means kinetic energy is becoming for me zero. And third point, radiation stops. Radiation stops, that is there is no electromagnetic waves happening, and in this position matter disappears. जैसे मिस्टर इंडिया देखा होगा ना आप लोग, तो उसमें घड़ी लगाने के साथ ही वो गायब हो जाता है, वही यही कॉन्सेप्ट है बेसिकल. ओके, एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या बेटा? द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम एंड प्रेशर इज बिकमिंग जीरो, इसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं या एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं. बोथ ऑफ देम आर वन एंड द सेम. ठीक है, उम्रा क्लियर है? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या? द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर. और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री केल्विन होती है या माइनस ऑफ 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. एट एब्सोल्यूट जीरो पे क्या क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो पे क्या क्या होता है बेटा? प्रेशर और वॉल्यूम जीरो होते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल सीजेस, यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, उसके रेडिएशन स्टॉप हो जाते हैं और मैटर विल डिसअपियर. इज इट क्लियर? चलो क्लियर है यहां तक? हाँ, मिस्टर इंडिया की कहानी है सीधा सीधा. देखो बेटा, ये तो आप लोग को आता ही होगा. फर्स्ट वन इज योर रियल गैस, अनदर वन इज ऑफ योर आइडियल गैस. ये डिफरेंस याद रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. थर्ड पॉइंट क्या लिखा मैंने? थर्ड पॉइंट क्या लिखा? रेडिएशन स्टॉप्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं रहते. ओके, देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. रियल गैस मतलब क्या बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय रियल गैस? In the real gas, the intermolecular force of attractions are present generally, whereas ideal gases में ऐसे कोई forces नहीं दिखाई देंगे अपने. ये perfect gas होती है, so there is no what we call dependence on the neighboring particle. ठीक है, तो इसमें मैं first point लिख रहा हूँ basically intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces of your attraction are present. Okay, and इसमें point number 1, intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction is 0. इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट गैस. क्लियर है? हाँ, ये क्लियर है सभी को? अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल गैस बोलते हैं. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली जीरो हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड एज ऑफ योर परफेक्ट गैसेस. ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर गैस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी, यानी इन दोनों के वजह से गैस की एनर्जी होती है. So the potential energy of the gas is due to the potential energy plus as well as of your kinetic energy.
whereas total energy of your ideal gas is only because of your kinetic energy. इस पे potential energy will become zero. ये भी बहुत बात पूछ चुका है already competitive track में. So did sir started new chapter? Anyone? New chapter नहीं है बेटा, thermal properties में ही continuation है expansion of gases का. तो total energy of the gas in the real gas क्या होता है बेटा? Potential energy plus kinetic energy. Whereas in ideal gas में it is only because of kinetic energy part. क्योंकि उसमें molecules seize हो जाते हैं basically, तो उसके पास कोई भी potential energy नहीं रहेगी क्योंकि there is no intermolecular forces at all, तो potential energy का सवाल ही पैदा नहीं होता उसके अंदर. ठीक है. Number 3, molecules are of finite size in this one beta. Molecules are of finite size or of your finite size, whereas in this one they are exactly point size. Molecules are of point size. Okay. Finite और point का difference क्या है? Finite मतलब comparatively दिखेगा. Molecules of the point, they are almost like point, not almost all measurable. And all gases are real gases beta. All gases are real gases. Okay, and in this one there is no perfect gas. There is no perfect ideal gas, but helium, H2 are nearly ideal gases. ठीक है, इतने पॉइंट्स अपने को याद रखना है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. रियल गैस में, real gas intermolecular force of attractions are present, and in this one very important is total energy of the gas is potential energy plus kinetic, whereas the total energy of ideal gas is only because of kinetic, और इसके अंदर potential energy zero होगा. Okay, all gases are your real gases. There is no perfect gas, but hydrogen and helium are nearly ideal gases. Clear है सभी को? Is that point clear? एक बार देख लीजिए फिर से एक बार जल्दी से. Absolute zero is nothing but what beta? The temperature at which the pressure or volume of the gas becomes zero is called absolute zero, and its value is minus of 273.15 Kelvin, और इसको हम लोग 0 डिग्री केल्विन भी बोलते हैं. At absolute zero क्या होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों जीरो हो जाते हैं. Okay, and don't make sure that it is P into V. I'm telling both pressure is zero and volume is zero. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको और क्लियरली लिख लीजिएगा, वरना फिर बाद में बोलना नहीं सर आपने P into V लिखा हुआ है. तो प्रेशर यहाँ पर जीरो का मतलब है और इसका मतलब क्या, वॉल्यूम भी जीरो. ठीक है ना. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल सीजेस, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, रेडिएशन भी स्टॉप हो जाएगा और मैटर विल डिसअपीयर. And you know what is an ideal gas and as well as of your real gas. Ideal gas किसको बोलते हैं? अगर intermolecular forces है तो उसको ideal gas बोलते हैं. And all gases are real gases. Molecules are of finite size. So total energy is because of potential and kinetic. Whereas in ideal gas, intermolecular force of attraction is zero. It is a perfect gas. The ideal total energy of an ideal gas is because of only the kinetic energy. Molecules are of point size and there is no perfect gas, but hydrogen and helium are nearly ideal gas होते हैं basically. Clear है यहाँ तक सभी को? मैटर डिसअपियर, हाँ मैटर डिसअपियर बोला था ना मिस्टर इंडिया के जैसा, वैनिश हो जाना क्योंकि दिखाई नहीं देगा. देयर इज नो रेडिएशन. डिसअपियर बोल रहा हूं मैं, यानी दिखाई नहीं देना. कोई सामने आपके सामने कोई चीज है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है दैट मींस डिसअपियर. ऑप्टिक्स में भी होता है इसी तरह से, इजंट इट? इवन दो देयर विल बी अ पर्सन, अगर ऐसा कोई मीडियम आपके बीच में ला दिया जाए तो आपके अतराफ क्या है वो दिखाई नहीं देगा. इजंट लाइक रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल वर्ल्ड में वैसा वाला बेसिकली. ठीक है ना. क्लियर है? चलो वेरी गुड. सो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, गैस लॉस. Next one is gas loss. First one in this one, Boyle's law. Boyle's law.
Yeah, for a gas, if mass and temperature T are kept constant, then pressure is found to be inversely proportional to inversely proportional to volume. ठीक है, so pressure is inversely proportional to volume. I can write here P is inversely proportional to volume, keeping mass and temperature constant. ठीक है, यानी P into V will be equal to your constant. So this is your relation. P into V is equals to your constant. ठीक है बेटा, so constant किस पे डिपेंड करता है बेटा? Constant depends on mass and temperature. ठीक है, so I can write here right now P1 V1 will be equal to your P2 into your V2. P1 V1 is equals to P2 into your V2. ठीक है, प्रेशर को हम लोग P में लिखेंगे, वॉल्यूम को हम लोग एरिया में भी लिख सकते हैं बेटा, तो P इंटू एल भी लिख सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आ जाएगा बेटा. सो दिस इज योर P1 एरिया into L1 is equals to your P2 A into your L2. Area gets cancelled. So it is P1 L1 is also equal to your P2 L2. अगर लेंथ में लिखना है तो बॉयल्स लॉ को हम लोग लिखते हैं P1 L1 is equals to P2 L2. अगर हम लोग को वॉल्यूम स्पेरिकल बॉडी है तो आई कैन राइट हियर P1 वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई into your R1 cube. That is equals to your P2 into your 4/3 pi into your R2 cube. 4/3 will get cancelled, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं P1 into your R1 cube is equals to your P2 into your R2 cube. So this one is in terms of your radius. Clear as we go? So P1 V1 is equals to your P2 into your V2 part of relation, or else P1 L1 is equals to your P2 into your L2, or P1 R1 cube is equals to your P2 into your R2 cube. Clear है? चलो इसके ग्राफ बताओ बेटा जल्दी से. Pressure versus volume, rectangular hyperbola, something like this. This one are known as of your isotherms. Pressure is inversely proportional. So this one is your rectangular hyperbola. ठीक है, इसका नेचर क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अगर मैं PV वर्सेस योर V और योर P का ग्राफ ड्रॉ करूं, ओके, ऑन एक्स एक्सिस मैंने वॉल्यूम लिया या प्रेशर ले लो, ऑन वाई एक्सिस आई एम टेकिंग P into V, so we'll be getting a straight line parallel to x axis, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा ना वो, तो P into V is always your constant, चाहे कि वॉल्यूम से लिखो या प्रेशर से लिखो. So graph drawn between pressure volume at a constant temperatures are always called as what beta? Isotherms. Clear है बेटा? ये ग्राफ भी आप लोग को आइडिया होगा ही होगा. अगर if I am taking a graph between your pressure versus 1/V, that will be what? A straight line graph passing from your origin. इस तरह से. This one. Okay, so that will be the condition. ठीक है बेटा,
graphs drawn between pressure, volume at your constant temperature. At constant temperature are called isotherms. क्लियर बेटा? ओके और इसके अंदर क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा? टेम्परेचर इज रिमेनिंग फॉर मी कांस्टेंट. ओके 1/v मतलब क्या होता है बेटा? किसी को याद है? क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, या इसको हम लोग डेंसिटी में भी लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना? ये 3 ग्राफ्स इसके अंदर याद रखना. हाँ तो रोज ही नोट्स पोस्ट कर ही रहा हूँ ना बेटा, नया क्या पूछना है उसके अंदर. ठीक है नोट्स तो डेली कर ही रहा हूँ. जितना मेटेरियल शायद मैं आप लोग को भेज रहा हूँ, शायद कोई आप लोग उतना मेटेरियल भेजता होगा. बस आप लोग की पढ़ने की ही देरी है. पता नहीं अब ऑनलाइन में आप लोग के पास कितना टाइम है, दुनिया का टाइम है, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, वही भी पता नहीं. मैंने आप लोग को एक सिस्टम बताया था रोज एक 5-5 क्वेश्चंस करने के. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली डूइंग. क्या लाइट ले लेके ऐसे ही चल जा रहे हो? अभी कोविड का भी सिचुएशन चल रहा है तो बाहर लोग और बहुत मेहनत कर रहे हैं और कंपटीशन ज्यादा होगा. लास्ट टाइम कोविड में ही क्वेश्चन पेपर अच्छा खासा स्टैंडर्ड का बना हुआ था. तो लाइट लेना नहीं है, एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन तो भी करके आना ही है. अगर आप मेहनत नहीं करोगे, लाइट लोगे, आराम पे कंसंट्रेशन करोगे ना, तो देन बस इतना ही चलते रहेगा. थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, मटेरियल तो मैं आपको भेजते ही रहूंगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं. I'll be the happiest person if you wear that apron and stethoscope and meet me next year at this time. लेकिन आप लोग मेहनत करो, घर बैठे हो, ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट करो. रोज के मैंने क्या बोला था, 5-5 क्वेश्चन तो भी करना है. जिनका अभी वीक है तो वो लोग तो 5 से लेके 10 क्वेश्चन से भी करना है रोज सुबह के टाइम पे. ऑनलाइन पे आपका ट्रैवलिंग टाइम कम हो गया, और मेहनत करना है, दूसरों से ज्यादा मेहनत करना है. ये 4-5 महीने ही है मेहनत करने के लिए, उसके बाद आप मेहनत करो बोले तो भी करने के लायक नहीं रहोगे. है कि नहीं? जितनी आपकी एनर्जी है, जितनी आपकी पोटेंशियल है, वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी आपको अभी बताना है. परफेक्ट गैस बनना है आपको, जिस तरह से इस तरह से सिर्फ भागम भागी होना, पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहना. यानी रेस्ट के बारे में नहीं सोचना है अपने. अगर रेस्ट करते रहोगे देन हो गई बात. पे ठीक है ना? वर्क करो, जरा स्टार्ट करो, मेहनत करो, और जब तक करो जब तक गोल रीच ना हो. ठीक है चलो नेक्स्ट वन. सो दैट वाज द स्टोरी अबाउट योर बॉयल्स लॉ. और नेक्स्ट वन लिख लेते हैं अभी. देखो चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या होगा बताओ? इसके अंदर 2 कंडीशंस होते हैं. मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि आप लोग ने रिसेंटली केमिस्ट्री में भी पढ़ाई होगी. ठीक है फर्स्ट वाला, वॉल्यूम ऑफ योर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर मैं गैस का प्रेशर और मास को कांस्टेंट रख दूं, ठीक है, or else volume by your temperature is also your constant, provided pressure and mass are remaining for me constant. ठीक है नेक्स्ट वाला, इसके अंदर ही नंबर बी, pressure is directly proportional to your temperature. Pressure is directly proportional to temperature provided volume and mass both of them are constant for the given gas. यानी P by T is equals to your constant, isn't it? So P by T is equals to your constant.
क्लियर है बेटा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर, बोथ ऑफ देम वन आर द सेम। अगर मैं इसके ग्राफ ड्रॉ करूं, इसके लिए ग्राफ आएगा, और इसके लिए भी एक ग्राफ आएगा। ओके, so what will be the graph beta? Can anyone tell me? Will be straight line passing from origin. इसके लिए भी straight line passing from your origin. और यहाँ पर हो गया वॉल्यूम और यहाँ पर हो गया टेम्परेचर, ठीक है, because V is equals to KT. This is making an angle of your theta. इसका स्लोप कितना बन जाएगा बेटा? Slope is nothing but your M, that is nothing but your tan theta. That is equals to your delta V divided by delta T, or dV by dt लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, isn't it? Because V is equals to K into T, isn't it? Comparing it with your, compare with Y is equals to M into your X, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन, यहाँ पर है अपने पास प्रेशर और यहाँ पर हो गया टेम्परेचर T और इसका एंगल हो गया थीटा। इसके लिए भी स्लोप लिखना है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। डेल्टा T इज योर टेम्परेचर, ठीक है बेटा। फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस, अगर अपन उसका प्रेशर और मास कांस्टेंट रखते हैं तो अपने को ये पता चला कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट निकाला तो वी आर गेटिंग सम कांस्टेंट K, so V by T is equals to some constant, or V is equals to K into T. Comparing with the straight line equation Y is equals to mx, we're getting a graph start passing from the origin. तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा V by डेल्टा T. And pressure is directly proportional to temperature. Volume and mass constant रहेगा, तो P by T is constant. तो इसके लिए भी straight line graph का रिलेशन आ रहा, ठीक है ना? So that will be the relation for that one. Clear है? Is that clear बेटा? Why class over बेटा? साइदा अजीब लोग है यार। स्टार मार्क करना है। All real gases behaves like ideal gas at high temperature, low pressure. Okay, and hence at high temperature and low pressure, all gases obey all gas laws. Okay, very important point. All real gases will behave like of your ideal gas. Kaise temperature pe beta? High temperature and low temperature. Hence, at your high temperature and low pressure, all gases obey your all gas law, like Charles law, Boyle's law, Gay-Lucas law. सब कुछ they will be occupying it. ठीक है?
चलो, and one more very important point beta, Kelvin scale is constructed based on Charles. इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि डिपेंड करता है गैस अपने क्या कांस्टेंट रख रहे हो, इसलिए हम लोग चार्ल्स लॉ को कंसीडरेशन करके हम लोग एक केल्विन स्केल बनाते हैं जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। उस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल। सो केल्विन स्केल किस पे डिपेंड करता है बेटा, किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ल्स लॉ। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वन, STP conditions. What do you mean by STP बेटा, कोई बता सकता है? What do you mean by STP? Standard temperature and pressure. What are the standard temperature and pressure beta? First one is temperature. Temperature is taken as 0 degree centigrade बोलो या 273.15 Kelvin बोलो या approximately 273 Kelvin बोलो, one and the same होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, प्रेशर। ठीक है, so pressure is always taken as of your 1 atmospheric pressure and 1 atmospheric pressure is equals to your H rho G लिखते हैं हम लोग। So atmospheric pressure P naught is equals to H into rho into G. Mercury use करते हैं, height of the mercury column is 76, density is 13.6, G value in CGS system ले रहे हैं हम लोग पूरा 980, unit is dyne per centimeter square। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सो इट विल बी 10 into 10 to the power of 3 into 9.8 SI सिस्टम में आता है बेटा, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इजंट इट। तो इसका ओवरऑल वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं, 1 atmospheric pressure is always equals to 1.012 into 10 to the power of 5 pascals। कैलकुलेशन के लिए डायरेक्टली हम लोग 10 to the power of 5 ले लेते हैं बेसिकली। So I can use here right now 1 atmosphere is always equal to your 10 to the power of 5 Pascal। For easy calculation अपन यूज करते हैं, वरना अपन को 1.01 भी यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, चलो वेरी गुड। और वॉल्यूम बताओ बेटा, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो आप लोग, तो वॉल्यूम तो आपको आना ही आना चाहिए। वॉल्यूम में तेरी STP कंडीशन क्या होता है बेटा, V is equals to your 22.4 liters, ठीक है ना, or else V is equals to your 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर इसको मीटर्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे बेटा, V is equals to 22.4 into 10 to the power of -3 मीटर क्यूब। ठीक है, so for 1 mole of gas, mass will always be equal to your N into your molecular weight, or N is equals to your mass by molecular weight. N will be equal to your mass by molecular weight. Clear beta? STP conditions, temperature is 0 degree centigrade or 273 Kelvin. Pressure in was 1 atmosphere, हम लोग ने last time statics में भी किया था। So 1 atmospheric pressure is 1.012 into 10 to the power of 5 Pascal. This one is CGS system, this one is an SI system beta. And 1 atmosphere is 10 to the power of 5 Pascal approximately. Volume is equals to your 22.4 liters or 22,000, that is 22,400 centimeter cube, or 22.4 into 10 to the power of -3 meter cube. And for 1 mole of your gas, N will be equal to your mass by molecular weight. Clear है सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को?